Welcome, my dear students. As the board suggests, we are today going to distinguish between theft and extortion. And this was actually intended to be the part of the last lecture, but in a flurry of moments भूल गए और लेक्चर उससे पहले ही ख़त्म कर दिया, तो हम थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के डिस्टिंक्शन के पॉइंट्स को डिस्कस करना भूल गए. I have written theft on the left side, extortion on the right side. ये 378, 379 इसके डेफिनेशन क्लॉज और पीनल प्रोविजंस हैं. थेफ्ट पनिशेबल है 379 में 3 years और फाइन बोथ. और भी स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं, लेकिन 378 से लेकर 382 तक थेफ्ट के प्रोविजंस हैं. और एक्सटॉर्शन इज डिफाइंड इन 383 एंड पनिशेबल अंडर 384 इन नॉर्मल कोर्सेज. सो ये डेफिनेशन है. अभी हम एक एक करके पॉइंट्स ले लेते हैं डिस्टिंक्शन के. नंबर 1 पॉइंट थोड़ा सा मैं ब्रीफली लिखूंगा क्योंकि पूरा यहाँ लिखना मुश्किल है. सो विल मोर रिलाई ऑन डिस्कशन देन ऑन राइटिंग. द फर्स्ट पॉइंट ऑन विच थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन स्टैंड अपार्ट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर इन केस ऑफ थेफ्ट द सब्जेक्ट मैटर यानी कि किस चीज़ की चोरी हो सकती है इज ऑलवेज a movable property. Movable property, as the definition suggests itself, that whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person. तो definition से ही हमें एक एक point मिलता जाएगा दोनों के definitions से कि distinction कैसे हो जाती है. So here the subject matter may be any property, because the word used there in the section is property. Whoever intentionally puts any person in fear of injury to that person or to any other, and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property. Number 1, any property. और इसके अलावा भी कुछ हो सकता है. valuable security और तीसरी चीज़ हो सकती है anything signed or sealed which may be converted into a valuable security. जो valuable security बन सकता है. valuable security की definition आपको section 30 में IPC के मिल जाएगी. So this is the first point of distinction. Moving on, अगर हम देखेंगे अब subject matter के साथ इधर thief क्या करता है, इधर extortionist क्या करता है, extortioner क्या करता है. Here he moves that property. So number 2, the gravamen of this offense is it involves in the movement of property or moving of property. Theft is constituted in moving of property, or mere moving constitutes the theft. And here extortion involves delivery of property or etc. ये property भी हो सकती है, valuable security or anything signed or sealed. So here the extortioner seeks the delivery of property. Point number 3 क्या होना चाहिए? Point number 3 अगर हम definition में जाएंगे, so here extortioner क्या करता है? Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person. Yes, fear of injury. Here element of fear और ये से कह सकते हैं force भी, लेकिन fear ही ठीक है, is not a prerequisite. It's not priorly required for theft. And here fear of injury is a prerequisite in case of theft. Extortion. So because the definition itself says that he has put that other person in fear of injury to that person or any other. And point number 4, that property is moved out of the possession. So here possession is an antecedent, or possession is always material, because अगर आपको प्रॉपर्टी या किसी थीफ को प्रॉपर्टी रोड पे पड़ी हुई मिली, पर्सन को वो प्रॉपर्टी ले गया, उठा ली वहाँ से, it's not in possession of any person, so it may not be a case of theft, though it may be a case of
criminal misappropriation, which will be discussed later on. And similarly here, property की possession immaterial है. Possession is immaterial because आप याद करिए definition को. Here the offender or the extortioner seeks the delivery of property. तो अब यहाँ पे मैं मिसाल भी दे के समझाता हूँ. ज़रूरी नहीं है कि जिसको extortion किया जाए उसी से property, वो किसी और के ज़रिए से भी property. For example, let's take an illustration. मैं यहाँ illustration ले लेता हूँ, फिर मिटा देंगे. A is a person और यही offender है हमारे केस में, extortioner. इसने other person जो B है उसको he put him in fear of injury और उसको ये कहा कि C के घर में चोरी करो, theft करवाई C के घर में. तो theft तो हो सकती है ऐसे, because चोरी है कैसे हो जाती है, that there is movable property वहाँ without consent ली जाई जाती है. But B is acting under fear of injury. इसको fear of injury कॉल, तो B तो बच जाएगा. जनरल एक्सेप्शंस में एक सेक्शन है 92, acts done under threat. So B will be saved by that clause. B का act offense नहीं हो सकता. But A has committed extortion. So property कहाँ थी? इसकी possession भी नहीं, इसकी possession में भी नहीं थी. So theft में, for the offense of theft, possession is material, and for the offense of extortion, possession is not material. वो उससे उसकी चीज़ मांग सकता है, उससे कहेगा किसी और की चीज़ मुझे दे दो, वो deliver करो. So number 5, point number 5 is here consent. Consent that property is moved, or the movable property, subject matter of theft, is moved without the consent of the person in possession. So consent and person in possession has a relationship. Here 6, consent is always material. Material यानी कि absence of consent होना चाहिए, ये नहीं कि consent होनी चाहिए, absence of consent. And if there is consent, it's not theft. But here consent is always immaterial as it is influenced by fear. So it's not a, hence it's not a valid consent as per section 90 अगर हम देखेंगे जो consent को define करता है. So this is a case in which involves consent. And let's look at कोई और point तो नहीं रह गया हमारे पास. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking. Yes, that's all. इतने points, this is point number 5. इतने points काफ़ी हैं. Lastly, आपको याद होगा इसमें हमने केस डिस्कस किया है के.एन. मेहरा का, स्टेट ऑफ राजस्थान, और प्यारेलाल भार्गवा. और इसमें कोई केस लॉ मेंशन करने से हम भूल गए थे, बट यहाँ अभी एक केस लॉ में जाऊँगा कि उसकी तरफ मैं रेफ़र करूँ आपको. मैनी ऑफ द टेक्स्ट बुक्स हैव रेफर्ड दिस केस, बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने काइंड ऑफ इसको कोट गलत किया हुआ है. द केस ऑफ रोमेश चंद्र अरोड़ा वर्सेस स्टेट. रोमेश चंद्र, आप इस केस को नोट करिएगा, रोमेश चंद्र अरोड़ा versus state. It's a case of 1960 AIR 1960 Supreme Court 154. What happened in this case? थोड़ा सा misstatement of facts हो गया है बहुत सारी text books में. In this case there was a girl and a person, actually in whatever circumstances, the facts of the case are silent about that. The person who was charged or who is here a offender or the accused or the appellant, यहाँ अपील करके सुप्रीम कोर्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. That accused person forced them to take off their clothes. This is not a material fact, but it's a background. And then after he on the pretext of false love, he took some photographs which are objectionable of a girl. So फिर उन photographs के बाद he kept on writing some letters to the father of the girl and asking some money, पैसा मांगा उसके बदले. And then he met on a certain day on the road और उसे कहा कि ये तो मेरा काम है, मैं extortion करता रहता हूँ लोगों से ऐसा पैसा. So चार्ज जो बनाया गया, चार्ज शीट बनाने में गलती हो गई,
इन अ वे। चार्ज उसको लगा क्रिमिनल इंटिमिडेशन का 506, जो 503 में डिफाइंड है, 506 में पनिशमेंट है इसकी। सो क्रिमिनल इंटिमिडेशन एक डिफरेंट चीज़ है। देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ फेयर ऑफ इंजरी, बट अगर उसके बदले प्रॉपर्टी मांगी जाए या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो एक इंटिमिडेशन के अलावा ये एक्सटॉर्शन है। तो ये केस क्योंकि एक्सटॉर्शन के बेस पे चला नहीं और चार्जशीट फ्रेम हो गई, और होते होते इसको जब रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और सो हो गई, ही वेंट बाय अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्क दिया जनरली, विच इज़ नॉट द रेशियो ऑफ द केस। एक्चुअली ये बताना मकसद था, इट्स नॉट द रेशियो ऑफ द केस, ये एक्सटॉर्शन यहाँ है ही नहीं। जस्ट अ रिमार्क दिया कोर्ट ने कि अगर कंसिडरेशन और द प्रॉपर्टी और मनी मांगा जा रहा है under that fair, it's a case of extortion। 384 के अंडर चार्ज फ्रेम हो जाना चाहिए था, but since ये केस extortion में बेस्ड था ही नहीं, so that sums it up। Thank you, this was a quite brief lecture। In next lecture we will discuss the provisions of robbery and डकैती।